trip like this. An incident or event that has happened in past, or you went somewhere. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So my screen is visible to you? Yeah, ma'am. Okay, can you see my screen? Okay, we Yeah, ma'am. waited for the students. Still we are waiting for the student. So I hope that as I start the class, so they all will come as you're already online. So I'm thinking to start the lecture. Okay, now are you ready to have my lecture? Yeah, ma'am. I'm Okay, ready. fine. So today we are going to learn about have to और has to, which means जरूरी है. जैसे कि कोई काम होता है जो बहुत ही नेसेसरी होता है और हर हाल में हमें करना ही करना है, तो वहां पर हम have to या has to का यूज करते हैं. सेकेंड वी हैव had to जो है वो पास्ट के बारे में डिस्कस करता है, मतलब एक ऐसा काम जो जरूरी था तो हमें करना पड़ा, मीन्स बहुत मजबूरी हो गई कि हमें ये करना पड़ा. एक होता है ना कि आपने जो है इस तरह क्यों किया, तो आप अपने वे में कहते हैं हमें ऐसा करना पड़ा, मतलब करना पड़ा एक मजबूरी को जाहिर करता है, ठीक है. एंड हैव टू एक जरूरत को जाहिर करता है जो बहुत जरूरी है बट आपने करना है. अक्सर हैव टू और हैज टू हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम किसी दूसरे को जो है वो हुक्म देते हैं और उसको जो ऑर्डर करते हैं, या हम ये कहते हैं कि आपको बस करना ही करना है क्योंकि ये चीज जरूरी होती है. थर्ड वी हैव विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा. तो इट इज अबाउट द फ्यूचर डिस्कशन कि इन फ्यूचर आपको ये चीज हर हाल में करनी पड़ेगी. तो बेसिकली हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू जो है कुछ ऐसे एक्शंस को, कुछ ऐसे जो है काम को जाहिर करते हैं जो हर हाल में आपको करना ही करना है. It means that it shows the indication about the necessity of ourselves or someone else, जो कि हमारी या किसी दूसरे की जरूरत को शो करता है. ओके, क्लियर? Yeah, ma'am. Clear. Okay, Okay, fine. ma'am. So let's move towards next slide. What we have to और has to. अब आप सोच रहे होंगे इसके बीच स्लैश होके have to has to क्यों हम एक ही जगह पे यूज करें, बिकॉज कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे हमने have to यूज करना है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ पे हमने has to यूज करना है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमने where we have to use have to and where we have to use has. Okay, to express impersonal obligation, गैर जाती जिम्मेदारी, मतलब कि ऐसी जिम्मेदारी जो कि आपकी बहुत ही पर्सनल हो, जो आपसे रिलेटेड हो कि मुझे ये काम करना है. एंड सेकंड एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, बैरूनी जिम्मेदारी, मीन्स कुछ ऐसी जिम्मेदारी होती है जो हमारी होती है और हर हाल में वी हैव टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशंस. एंड सेकंड जो है वो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो वी ऑर्डर देम टू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर जब उसको ये काम करना है तो बस करना ही करना है, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, हम उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे होते हैं. When something is necessary, जो कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है करने में, तब हम have to has to का यूज करते हैं. एंड when we discuss about a job role, जब हम किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, जब हम किसी को हम ये चीज बताते हैं कि ये जो है आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हर हाल में करना है, there we can use have to और has to. Clear? Yeah, ma'am. Clear. Okay. Okay, we move towards next slide. So next slide is very important about the basic structure. मतलब जो हमारे पास basic structure है वो क्या है? Basic structure means हम जैसे कि हर जो sentence है उसके बारे में जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है sentence creation कैसे होती है, structure, किसी भी चीज को explain करने के लिए उसका structure बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ structure हम क्यों बताते हैं? इससे हमें sentence की formation का पता चलता है. How you have to make a sentence. So the basic structure is where have to is used. Have to is used with only these subjects: I, you, we, they and plural nouns. जो हमारे पास I, we, you, they और plural noun का मतलब है ढेर सारे जो नाम एक साथ इकट्ठे हो जाए, जब हम ढेर सारे लोगों के बारे में बात करते हैं वहां पर हम have to करते हैं. And where we can use has to को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. Has to can be used only with the subjects he, she, it और singular noun. यानी has to हम he, she, it या किसी एक नाम के साथ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकरम हैज टू, असलम हैज टू, मलाइका हैज टू.
और हैव टू जब हमारे पास प्लूरल आ जाते हैं, लाइक अकरम एंड असलम हैव टू, और द बॉयज हैव टू, द गर्ल्स हैव टू, तो ये ज्यादा नाम आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ Yeah, ma'am. Clear. मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे आएगा, मतलब पूरा एक सेंटेंस क्रिएटेड। सबसे पहले हमने सीखा कि हैव टू हैज टू का जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन वी हैव लर्नड अबाउट वेयर यू कैन यूज हैव टू एंड वेयर यू कैन यूज हैज टू। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक थीम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। ओके, फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, शी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, निमल इज अ नेम। देन सब्जेक्ट को देखते हुए हम वी हैव टू कीप इन माइंड कि कहाँ पे हमने हैव यूज करना है, कहाँ पे हैज। नाउ आई है तो आई के साथ वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हम हैव यूज करेंगे, और शी जो है और निमल जो है वो नेम है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। अब हमारे पास बेस वर्ब आते हैं। बेस वर्ब मीन्स हमारा सारा सेंटेंस इस बेस वर्ब पे रिलाई करता है, जो हमें एक्शन शो कर रहा है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है। हाँ, वर्क हार्ड मीन्स बहुत मेहनत करनी है, सख्त काम का बेसिकली मतलब होता है मेहनत करना। शी हैज टू पार्टिसिपेट इंग्लिश, उसको इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है। मीन्स कि एक लेक्चर हमारे पास आ रहा है और हमारे पास एक इवेंट है, और वो जो है उसको एक डिबेट मिली है और उसको इंग्लिश की डिबेट मिली, तो इंग्लिश में ही वो डिबेट क्या करेगी, कन्वे करेगी। निमल हैज टू वेयर व्हाइट, निमल को जो है वो सफेद रंग पहनना है। अब आप देखेंगे इसमें हम क्या करें, एक तरह से ऑर्डर कर रहे हैं, और ऑर्डर किस फॉर्म में, हम उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें कि ये काम आपने मस्ट करना ही करना है, यू हैव टू डू इट, आपको करना है। गॉट इट? Now we have some examples. Okay, Yeah, after ma'am. these examples, I'll ask you to make few sentences about have to and has to. The examples is about I have to see the doctor. मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे see the doctor तो मतलब डॉक्टर को देखना नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना होता है। She has to drink a lot of water. उसको बहुत ज्यादा पानी पीना है। They have to clean their room once a week. उनको अपना कमरा एक हफ्ते में साफ करना है। मीन्स कि एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा कि उनको अपना कमरा साफ करना ही करना है, चाहे कुछ भी आ जाए, हो जाए। सारा हैज टू चेंज हर बिहेवियर, सारा को अपना जो रवैया है वो चेंज करना है, तब्दील करना है। मे बी उसका रवैया बहुत बैड हो और उसको अपना बिहेवियर अच्छे की तरफ लेके जाना हो। वी हैव टू वर्क टुगेदर, हमें मिलकर काम करना है। मतलब कि चीज जो है वो टीम वर्क के बारे में है, और ये बहुत जरूरी है। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो इट विल नॉट वर्क फॉर इट अस, ओके, तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। ओके, नाउ कैन यू टेल मी फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हैज टू एंड हैज टू। आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताएं जिसमें हैव टू भी यूज हो रहा हो और हैज टू भी यूज हो। ये वाला बात। Okay, ma'am. Okay, ma'am. I have to completed my assignment within a 1 hour. ओके, अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंप्लीट, आपने कंप्लीट कहा तो हम Complete. फर्स्ट I have to complete. Yeah, I Yes. have to complete my assignment within a 1 hour. within an She hour. Okay, fine. Fine. she has Good. to come in our home in this Yes. week. Okay, yes. And two more sentences of have and And has. they have to Okay. clean. They have to do the laundry once a week. Okay. Okay. And Ali has to. yes. Yes, Ali yes. has to Yes. eat his food 3 times a day. Yes, yes. Very good. That's it. Fine. There was a very good effort, माला अब्बासी. So इस चीज से जाहिर हो रहा है कि आप चीजों को जो है वो पिक कर रही हैं, आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैं साथ साथ आपसे प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ, ताकि वो आप ना चीजें भूले नहीं, साथ साथ चल रही होती है। फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। So this is the basic structure. हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज का आ रहा है। अगर हम वही सेंटेंसेस को नेगेटिव में लेकर जाएंगे, मीन्स हमारे पास नहीं की सेंटेंसेस बनेंगे, तो कैसे हम बनाएंगे, वहां भी हम डोंट और डजंट का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे तो आई के साथ हैव लगेगा, शी के साथ हैव लगेगा, निमल के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव। लेकिन यहाँ आपने एक चीज नोट की, हैव यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पर हम सब जगह पे हैव ही लगा रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? आप मुझे बता सकते हैं मतलब बस हम यहाँ पर सब सब्जेक्ट्स के साथ हैव क्यों लगा रहे हैं, हैज क्यों नहीं लगा रहे हैं? Sir, ma'am, that's why when we use does or
does, sorry, then the first form, I said yes, then go here. And that's the point that we are using have because has. Yes, very good. Correct. You have told me so perfectly. Yeah, यहाँ we have used I don't and she doesn't. Fine. तो वो जो एक present tense वाला scene था वो आ रहा है. That is why we haven't used has and here. And apart from has, we have used only have. So I and with they and with like plural nouns and with you and we. What we can use? We can use don't, and with he, she, it, any name and singular noun we can use doesn't. And apart from this, only we have to use have. Okay, got it? So I don't have to work hard. मुझे जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. She doesn't have to participate singing. उसको जो है गाना गाने की जरूरत नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी गाना गाने में. निमल डजंट हैव टू वेयर व्हाइट. निमल को सफेद रंग पहनने की जरूरत नहीं है. दे डोंट हैव टू कम अर्ली टू द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस. उनको जो है ग्राउंड में, मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी आने की जरूरत नहीं है. So here is the phrase structure. Now come with few examples of don't and doesn't. I don't have to wear white shirt. मुझे सफेद शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है. She doesn't have to come early. उसको जल्दी आने की जरूरत नहीं है. Alex doesn't have to prepare meal every day. Alex को रोज की बुनियाद पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है या उसको खाना नहीं बनाना पड़ता. So you don't have to change your behavior. Wait a minute. So you don't have to change. You don't have to change your behavior. आपको अपना जो behavior है यानी अपना जो आपका रवैया है उसको change नहीं करना पड़ेगा. मतलब it is not necessary. Your behavior is also going so well. We don't have to listen to him. हमें उन्हें नहीं सुनना पड़ा क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि उसको सुनना जरूरी नहीं है. Now are you clear with the example? Yeah, ma'am. Okay. Can you make few sentences for me using don't and doesn't? Amal don't have to do her work. Yes, very good. They don't have to play Yes, with very the good. team. Yes, very good. And you don't have to you don't have to prepare the lecture. Yes, very good. And how you can make use sentences of using doesn't? Okay, she doesn't have to. She, she clean her clothes. Yes, very good. And he doesn't have to complete her stationery. Very good, very good. It was a very good effort. So are you clear with the examples? Now you are familiar that how you can use doesn't and don't. Fine, तो उसको ये काम नहीं करना पड़ा. When we say कि मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ी, I have to work hard. अगर आप मुझे सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ी, I don't have to work hard. Okay. Now move towards next slide. So basic structure. अब हम अगर question mark की तरफ जाएंगे, how we can use the sentences of making a question. When we have few sort of question using like have to, then how can we have a basic structure? So यहाँ पर भी same procedure. What you have to do, only you have to do this, like you have to use do and does in the beginning of the sentence. So here do and does means question mark. आपने do और does जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है. इसका मतलब क्या होता है? बाकी सेम वही प्रोसीजर है, सबके साथ have लगेगा. ओके, इंस्टेड ऑफ has. यहाँ पर भी has skip हो जाएगा. So this is the basic rule of have to sentences, that you have to use have to and has to only in affirmative sentences. Affirmative means जो सादे जुमले होते हैं जिसमें नहीं और सवालिया निशान नहीं होते, वहां पे हम have has यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर question mark arise and the sentences is in negative form, so here you have to use only have, okay, instead of has. And instead of has, you have to use don't and doesn't. And if it in the form of it is
question. What you have to do, you have to use do and does in the beginning of the sentence. Okay. So now this is the basic structure. Do I have to work Yeah, ma'am. hard? क्या मुझे बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ी? Does she have to participate singing? क्या उसको गाना गाने के मुकाबले में शिरकत करनी पड़ी? Does निमल have to wear white? क्या निमल को जो है सफेद रंग पहनना पड़ा? Do they have to come early? क्या उनको जल्दी आना पड़ा? Now clear? Okay, now I'll ask you to Yeah, make ma'am. few sentences of using do and does in the beginning of sentence. Okay? Okay. Does Iqbal Saab have to join the class? Yes, very good. And do you have started the class? Yes, very good. Start the class. Do you have to start the class? Start. Yes, very good. Yes. Okay. Okay, and Do they have to come. save the country? Do they have to save the country? Yes, very good. It was a very good effort. Mala Basi. Okay, sir, Muhammad Iqbal Malhi, you have just joined the class. So, am I audible to you? Yes, Muhammad Iqbal Malhi, am I audible to you? So, let's move towards next slide. This slide is about the examples of using do and does. So, how you can have your examples? Do I have to come early every day? क्या मुझे रोज जल्दी आना पड़ा? Yes, you do. हाँ, आपको ये करना होगा. Okay. Yes, yes, Iqbal Malhi, you want to ask something? Yes, ma'am, you are audible, but there is a lot of distortion and there is a lot of disconnect. Okay, it's okay. But am I audible to you? Can you see my screen? Sorry, ma'am, you are not audible to me. Why? Because from my side there is Sorry, no ma'am, there is problem. no Maybe at your voice. place. Okay. Now I am audible to you. Okay. So yes, you Sorry. do. अगर आप वो Yes, you are no audible. You are no audible. Okay. Yes. So do I have to come early every day? क्या मुझे रोजाना की बेस पर जल्दी आना पड़ेगा या जल्दी आना पड़ा? Yes, you do. हाँ, आपको करना पड़ा. अगर नहीं में हो no, you don't. नहीं, आपको नहीं करना पड़ा. अच्छा, यहाँ आप देखिए, आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है. Sorry, Only what I have to do? Yes, sorry. Do I have to come early every day? I am just explaining the sentences. So, Ma'am, I am asking just one question. ma'am, what I have to do? No, I am just explaining the sentences to you, okay? Muhammad Iqbal Malhi. Yes, Mala Basi, what do you want to ask? Ma'am, here you are saying that do I have to come early? Yes, every day. क्या Yes. मुझे हर दिन जल्दी आना पड़ा? पड़ा, yes, मीन्स पड़ा. कि ये पड़ेगा. No, पड़ेगा आने आ वाले गया. दिन के बारे में No, पूछा जा रहा है या के पिछला कि ये नहीं. मैं मतलब कर चुका हूँ जो हाँ, हो चुका है उसके बारे में है कि यानी मैं मुझे हर दिन आना ये पड़ा, जो है ना, मुझे हर दिन do I खाना have पड़ा, to come मतलब early पिछले every day? क्या मुझे, अच्छा, ये आपके पास के बारे में बताए क्या मुझे हमेशा जल्दी आना पड़ा? अब जो करेगा वाली है ना, वो विल हैव में आएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा. ओके ओके आगे ओके आएगा. मैम. फ्यूचर के इट्स बारे में यूज्ड जो फॉर will have पास्ट, आगे आ रहा है. नियर Yes, पास्ट. it is used for, yes. Okay, yes, नियर very good. पास्ट. अब will have वाला जो फ्यूचर में, वो अगली स्लाइड्स में आएगा. ठीक है. ओके मैम. Yes. Does she have to see the doctor once a week? क्या उसको डॉक्टर के पास सिर्फ हफ्ते में एक बार जाना पड़ा? Do they have to clean their room daily? क्या उनको अपना कमरा रोज साफ करना पड़ा? Doesn't she have to change her behavior? क्या उसको अपना रवैया तब्दील नहीं करना पड़ा? अच्छा, यहाँ पे sorry. doesn't है. Yes, sorry, what happened, Mohammed Iqbal Malhi? Am I not audible to Yes, you? ma'am. No, yes, definitely. No, you are audible. Yes. What I have to do? No, I was just explaining the sentences. Okay, so I asked that, are you familiar with these sentences?
Yes, ma'am, definitely. I am doing it. Okay, so Okay. I'll also give you activity. First of all, I would like to give you example, then I'll give you activity. Okay. 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 Okay, now, here you can see that doesn't she have to use. It means क्या नहीं करना पड़ा. तो अगर हम किसी चीज के बारे में हम क्या भी लगा रहे हैं, वहां नॉट भी लगा रहे हैं, तो डज नॉट स्टार्ट में हो जाएगा. ठीक है, ये नहीं होगा कि डज स्टार्ट में हो जाएगा या नॉट कहीं बीच में आएगा. वो डजंट हो जाएगा. ठीक है, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा. अगर वो किसी प्लूरल नाउन के साथ है या दे आई यू के साथ है, तो फिर डोंट स्टार्ट में हो जाएगा. अगर नॉट आएगा, डोंट दे हैव टू क्लीन देयर रूम डेली, क्या उनको रोज अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. लेट्स प्रैक्टिस. व्हाट डू यू हैव टू डू इन द वर्किंग प्लेस. आपको एक वर्किंग प्लेस पे क्या करना पड़ता है. तो आई हैव टू रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम. मुझे अपने बॉस को जो है या जो भी है उसको टाइम पर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है. आई हैव टू वेयर ऑफिस अटायर. ऑफिस अटायर मीन्स दफ्तर का लिबास. मुझे अपना दफ्तर का लिबास पहनना पड़ता है. आई हैव टू वर्क फॉर 8 hours पर डे. मुझे दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता है. ओके, तो व्हाट डू एंड डोंट हैव टू डू इन द वर्किंग प्लेस. अब वर्किंग प्लेस में आपको क्या क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है, तो वो चीजें आप बताएंगे. यहाँ पर हमारे पास स्लाइड्स है और यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस गिवन है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस एक स्लाइड दिखाई, यहाँ पर प्रोफेशन क्या है, एक ऑफिस वर्कर का बता रहा है, एक एम्प्लॉय का. तो वहां उसको क्या क्या करना पड़ता है. आई हैव टू रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम. आई हैव टू वेयर ऑफिस अटायर. आई हैव टू वर्क फॉर 8 hours पर डे. तो एक ऑफिस एम्प्लॉय की यही काम है जो उसको डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं. So in the next slide, we have a lot of professions given over here. So what you have to do, you have to choose only one profession and then you have to describe that what you have to do. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है, एक अकाउंटेंट है. ठीक है, यू आर एन अकाउंटेंट एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस. तो हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट व्हाइल यूजिंग हैव टू और हैज टू. या अगर किसी अकाउंटेंट के बारे में हम बात करें, ही इज एन अकाउंटेंट, वो एक अकाउंटेंट है. एन अकाउंटेंट हैज टू प्रिपेयर अकाउंट्स एंड टैक्स रिटर्न्स. एक अकाउंटेंट को जो है वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और टैक्स रिटर्न बनाने पड़ते हैं और टैक्स रिटर्न करने पड़ते हैं. He has to audit financial information. एक अकाउंटेंट को जो है फाइनल इंफॉर्मेशन जो है जितनी भी टैक्स रिपोर्ट की उसको ऑडिट करना पड़ता है. मींस क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है और आगे लोगों को सेंड करना पड़ता है. He has to analyze accounts and business plans. और एक अकाउंटेंट का क्या काम कर होता है कि वो अकाउंट्स को देखता है और बिजनेस प्लान्स को देखता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है. ये एक अकाउंटेंट की एग्जाम्पल. ठीक है, ये है प्रेजेंट के बारे में हम बात करें. अब हमारे पास क्या अकाउंटेंट का हो गया, हमारे पास यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल्स गिवन है. आर्किटेक्ट है, बेकर है. बेकर जो है वो जो केक बेकिंग करते हैं. आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कि बिल्डिंग्स के हाउसेस वगैरह के मैप्स बनाते हैं. एक्टर है, असिस्टेंट है, बिल्डर, शेफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, डॉक्टर. अब इन सब के डिफरेंट टास्क होते हैं. So what you have to do, you have to pick any two and you have to explain to me while using has to and have to that what is the main task of these professionals. Okay, Mala Abbasi, first is your task. आप कौन सा प्रोफेशन इसमें से चूज करना चाहेंगी, फिर उसके बारे में बताना चाहेंगी. Okay, ma'am. Teacher? Yes, yes. Teacher. Okay. So what are the tasks of a teacher? What she has to do? A teacher has to prepare the assignments. A teacher has to prepare the lectures. A teacher has to do the checking and rechecking. Teacher has Yes, to very complete good. the task, and And a teacher has to teacher analyze the has to student's come. progress. Yeah, and teacher has to come in time Yes. and leave the after in time. Okay. And we have to use also the teacher has not. What the Yes, task teacher because has you not done? also have Have to told me what doesn't what things which she doesn't have to do. okay, Do's and don'ts दोनों बताने. अब कौन सी ऐसी okay, चीजें जो टीचर को नहीं करनी चाहिए क्लास में. okay. A teacher does not have to punish the student. Yes, A very teacher good. does not have to waste the time. Yes, very good. A teacher does not have to um, leave the Yes, class.
Very good. Teacher doesn't have to come late. Yes, very good. A teacher doesn't have to. Anything? Okay, now how we use it the same thing in question form. अगर कोई सवाल है टीचर से रिलेटेड प्रोफेशन से रिलेटेड किस तरह हम उसको डज को यूज करते हुए डज हैव टू को हम करेंगे. Does a teacher have to perform her duty honestly? Yes, very good. Yes, very good. Does a teacher have to uh, be absent? Yes, very good. यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या टीचर को एब्सेंट होना पड़ता है और वी कैन आल्सो से अगर हम ये सेंटेंस बोले कि क्या टीचर को स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो फिर इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. Does a teacher have to work hard for student? Very good, very good. Okay, Malabas, it was a very good effort by you. Okay, now Muhammad Iqbal Malhi, it's up over to you. Now you have to choose any one profession among these lists, and you have to tell me the do's and don'ts about that one profession. Yes, Muhammad Iqbal. What sort of profession you would like to choose? Yes, Muhammad Iqbal Malhi. Am I audible to you? Hello. Yes, yes. Hello, I'm ma'am. listening. Yes, I'm hearing. Sorry. Yes, ma'am. I have to choose one profession as well. Yes, you have to choose one profession and you have to tell me about it. Hello. There is lot of distortion first of all, and then sorry. I have to speak on one profession. Yes, you have to speak about only one profession, Okay. anyone you would like Only to one. choose. Okay, ma'am. I would also prefer to the field which I am connected Yes, with. I am farmer, so I would like to tell about the farming, the yes, very good. Yes, compulsions as well. A farmer, yes, a farmer has to work hard. He has to work yes, day and nights. A farmer yes. has to plow his land. A farmer has to sow seed in the Hmm. plowed land. A farmer has to spray pesticides and herbicides for the protection of her crop. A farmer has to harvest her crop at the specified time. A Okay, and farmer Sir has Muhammad to Iqbal Malhi, wait, listen to me. earn. What sort of work which the farmer doesn't have to do? Which are the things which he doesn't have to do? जो उसको नहीं करनी Yes, पड़ती. a farmer must have. Yes, a farmer has not to be at any stage show any you can say negligence. A farmer has not to show at any irresponsibility. A farmer has Okay, to yes, uh, okay. Ma'am, give has extra our feed doing in does form not of have fertilizers or other such Mhm. same nutrition. A farmer has not to bow his head And if for you the want to hardships of. ask something about the farmer's profession, so how will you ask? Sorry, ma'am, Like how there you is use in a connectivity issue. question I am. form? Yes. And does a farmer have to plow her land at its Yes, specific very time? good. Does a farmer has to water the crop at the start of ripening the crop? Does a farmer has to spray the pesticides which are short in the market as well with high cost? Does a farmer has to use fertilizer for proper growing of their crop? Yes, very Does good. a farmer has to does a farmer has to first of all search the weather report before watering the land? Does a Mhm. farmer has to prepare her land according to the its moisture level? Does a Yes, farmer yes. has to also cultivate the Iqbal land Malhi, it was which a very is good bare? effort by Yes, you and Mala Basi, both of you. So I hope you are both familiar with how you can use has to, where you have to use have to,
and where you have to use does have to and don't have to. Okay, now are you familiar Ma'am, I by, have a question. sorry, I have a question. yes, you may ask. Ma'am, Malhi, Iqbal Malhi Saab is saying about that has not. Sorry, Is it correct? Does have not. no, no, Malhi Iqbal Have. no, Saab is he has saying to that use, does no, not, has not, and does with, not has. no, no, Then is it with does, clear? yeah, Okay. no, no, with does you have to use only have with all of the subjects. Okay, doesn't don't. Okay. Yes, Yeah. sir. I think so. It will be clear. Yes, yes. Because as I have told you earlier कि हम have not has और सिर्फ affirmative sentence में use करते हैं. Affirmative means simple Yes. sentence. अगर वहां पे negative और question mark आ जाता है तब doesn't और don't use होता है और has नहीं use करेंगे. Only we will use have. Okay. Right. Right. Okay. Okay. No. Now what we have to do, we have to move towards next slide. See here I am using have to कि हमें जो है वो next slide पे move करना पड़ा है. Okay. So here we have discussed about present. हमने सारा present के बारे में discuss किया. Now we have to discuss about past. Past के बारे में discuss करेंगे. उसके बाद हम future के बारे में discuss करेंगे. तो present में हम have to has to use करेंगे या doesn't don't have to. ठीक है. और past में हम use करेंगे had. Had to का मतलब है कि करना पड़ा. Necessity in the past. ठीक है. अगर have to has to आया it means necessity in the present. जिस चीज की हमें present में जरूरत है. अगर had to आया it means वो चीज जिसकी हमें पास में कभी माजी में जरूरत होती थी. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि बचपन में हम जो है वो लालटेन यूज करते थे. हमें लालटेन यूज करने की जरूरत पड़ती थी. हाउ वी डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश, वी हैड टू यूज लालटेन और वी इन आवर चाइल्डहुड. हमारे बचपन में हम जो है वो क्या करते थे, लालटेन लालटेन यूज किया करते थे. तो मतलब ये हैड पास्ट का जमाना है. तो पास्ट हैड टू जहां पर भी आएगा तो आप समझिए कि पास्ट के बारे में बात हो रही है. नाउ कम टुवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा. अच्छा, हेड टू की मजे की बात ये है कि यहाँ पर हम जो है जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं सबके पास है, सबके साथ हेड टू लगेगा. यहाँ पे कोई हैज टू हैव टू वाला चक्कर नहीं है. ठीक है. आई वी यू दे हैव ही शी इट. सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन. सिंगुलर मीन्स कि एक नाम, प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाम. तो उन सबके साथ हम हेड टू लगाएंगे क्योंकि पास्ट के बारे में बात चल रही है. प्लस बेस वर्ब. बेस वर्ब का मतलब है बाकी जितने भी हमारे पास वर्ब है और आगे रेस्ट ऑफ अदर सेंटेंस है वो किस तरह से बनता है. ठीक है. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब हमारे पास प्रैक्टिस है. इसके बाद मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछूंगी. आई हैड टू कैरी माय बैग माय सेल्फ एज देयर वाज नो वन टू हेल्प मी. अब यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस में वाज यूज हो रहा है. तो वाज हमेशा था के लिए यूज होता है. ठीक है. तो समझिए कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, कुछ घंटे पहले की बात हो रही है. मुझे अपने बस्ते जो है या बैग जो है खुद उठाने पड़े या लेकर जाने पड़े क्योंकि वहां कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए. शी हैड टू रिपेयर हर फोन. उसको अपना जो फोन है रिपेयर करना पड़ा. ठीक है. पड़ता है नहीं, पड़ा. दे हैड टू अटेंड अ funeral so they couldn't attend the online class. उनको जो है फॉर्मल किसी को कहते हैं, मतलब फॉर्मल कमीज के, उनको जो है किसी का जनाजा अटेंड करना पड़ा, जनाजे पे जाना पड़ा था, इसीलिए वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाए. कुडंट भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है जो कि हमारे पास्ट को शो करता है और फर्स्ट फॉर्म होती है कैन. सैम हैड टू लीव द क्लास अर्ली. सैम को जो है वो क्लास जल्दी छोड़नी पड़ी थी या पड़ी. निमर एंड सुनील हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन यस्टरडे. निमर और सुनील को जो है कल ट्रेन से सफर करना पड़ा बिकॉज दे फिनिश्ड देयर वर्क लेट. क्योंकि उन्होंने जो है अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था. वी हैड टू फिनिश द क्लास अर्ली लास्ट वीक ड्यू टू फेस्टिवल. पिछले हफ्ते जो है हमने क्लास जल्दी फिनिश कर ली थी, मतलब हमने जल्दी छुट्टी ले ली थी क्लास से क्योंकि हमें जो है वो क्या था, फेस्टिवल पर जाना था. एक हमारा फेस्टिवल था. फेस्टिवल का मतलब होता है क्या, त्योहार. ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करना पड़ा. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब मोहम्मद इकबाल मलिह एंड माला बासी, यू हैव टू मेक अ कन्वर्सेशन. आप दोनों को आपस में कन्वर्सेशन करनी है जिसमें आप हैड टू का यूज करें. मीन्स आप अपने पास्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें डिस्क्राइब करें जिसके बारे में आप दोनों हैड टू का यूज करें. ओके. नाउ माला अब्बासी एंड मोहम्मद इकबाल मलिह, ओवर टू यू. यू हैव टू यूज हैड टू. आप दोनों आपस में कन्वर्सेशन करें. मतलब यू बोथ आर ओल्ड नेबर्स. आप दोनों पुराने पड़ोसी हैं. तो हाउ यू विल डू अ कन्वर्सेशन रिलेटेड टू एनी टॉपिक बाय यूजिंग हैड टू.
Okay. Yes. How you can use it? Okay. Iqbal Sahab, have you listening me? Iqbal Sahab, are you listening me? Yes. Muhammad Iqbal Malhi Saab, are you listening to her? Hello, Yes. hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Are you Yes. listening? Yes. What had to do in the joining this class, ma'am? Malabasi? Hello. What had to do Uh, you before joining the class? I had to do my home task, but I think so. We have to conversation about the old neighbors, that we are old neighbors, and then we have to conversation. Okay, right, So you are you right, have right. to have the Yes, conversation about being a neighbor. yes, yes. Hello, Malabasi. How are you? And what are you doing here? I'm fine. I'm here to visit bazaar. Was there everything okay? Because few from last few days I had not observed any activity on your side with like children were playing in your home before few days ago, but nowadays I had not listened any such voice which may give me information that you were present in the house. Have you gone anything anywhere outside? Yeah, I had to shift it in the uh, in Lahore. That's why you did not see us. Sorry, please kindly repeat because there was not listening at that time. Disconnection I'm was like saying that might be. I had to shift it. I have to shift it in Lahore. That's why Sorry. Okay, okay. Was there anything, everything okay in Lahore? Why have you gone to Lahore? I had to I had to go Lahore uh, because there is facilities of job. So I had to apply here, and now I shifted here to join my new job. Okay. I What had to is the shift salary here. of your new job? What would be the salary of your new Uh, job? they had to offer me 50,000. Okay, but I think that there you will have to face a lot of problems from shifting here because you are living here from long ago. Yeah, I had to face many difficulties, but now I am settled down. Okay, that is excellent. And had you Okay, also wait, both of you. Most of the things decided that you have to discuss while using had to past में जो चीजें होती हैं. For example, आप पूछ सकते हैं मोहम्मद इकबाल मलिक के what happened when it was raining yesterday at your side? क्या हुआ जो आपके साइड पर जो है वो बारिश हो रही okay, थी? Then okay, Malabasi can say that I had to take the umbrella while going out. okay. मुझे जो अपनी छतरी लेनी Sorry, पड़ी थी बाहर जाते हुए. sorry, ma'am. तो इस तरह की I had to also think about it. yeah. Sorry? Can you hear us, Mohammed Iqbal Malhi? Sorry, ma'am. Sorry, please. There's a lot of Okay, net okay, connect. it's okay. Okay, it's okay. So it was a very good effort by both of you. I hope you have understood better that how you can use had to in a sentence. Okay, so Yeah, ma'am. we have Yes. already used this. Okay, now how we can use
द हैड टू इन अ नेगेटिव फॉर्म। अगर हम हैड टू को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे या हम क्या में यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? अच्छा, हमारे पास हो जाएगा डिडंट, ठीक है, डिडंट हैव टू। तो मतलब जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हमारे पास क्या आएगा? डिडंट हैव टू, मुझे नहीं करना पड़ा था। और हैड टू चेंज हो जाएगा हैड टू में, ठीक है। हैव टू क्यों चेंज हो जाएगा हैड टू हैव टू में? क्योंकि डिडंट जो है वो ऑलरेडी क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो हैड टू भी हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो एक जगह पर दो सेकंड फॉर्म्स नहीं लग सकती। अगर हम ऐसे करेंगे डिडंट हैड टू, तो वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म है और हैड भी सेकंड फॉर्म है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज अ रूल ऑफ इंग्लिश कि एक जगह पर कभी भी दो सेकंड फॉर्म्स या थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती। अगर पहला फॉर्म जो है वो सेकंड होगा, तो दूसरा फॉर्म ऑलरेडी क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। यही बेस स्ट्रक्चर जो है हमने हैव टू में फॉलो किया, ठीक है। तो you can use with all subjects didn't have to plus base verb। didn't have to का मतलब है नहीं करना पड़ा था। Now let's practice। I didn't have to go early last Monday। मुझे पिछले पीर को जल्दी नहीं जाना पड़ा था। We didn't have to complete the assignment last week। हमें जो है पिछले हफ्ते असाइनमेंट जल्दी मुकम्मल नहीं करनी पड़ी थी। You didn't have to apply for the job। आपको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा था। They didn't have to go to the school last Monday। उनको पिछले मंडे स्कूल नहीं जाना पड़ा था। रुबान didn't have to scold his wife। रुबान को जो है अपनी बीवी को नहीं डांटना पड़ा था। Okay, can you tell me two examples of using didn't have to? Yes, Mala Basi, can you tell me any two examples of using didn't have to? Yeah, ma'am. I uh, I didn't have to go at Yes. my mother's home last Okay, very good. month, Yes, very good. And and you didn't have to come on my home at my home. yes, very good. They Okay, didn't it was have a to good go for effort. play Mhm. Yes. Okay, it was a last good week. effort. Very good. Okay, now Muhammad Iqbal Mahi, it's over to you. You have to tell me any two examples while using didn't have to. Yes, Muhammad Iqbal Mahi. Can you hear us, Muhammad Iqbal Mahi? Okay, I will give you few examples apart from my side. You can say that I didn't have to take the umbrella last Friday because it was not raining heavily। पिछले हफ्ते को मुझे जो है वो छतरी नहीं लेनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही थी। I didn't have to make nuggets for my kids because they were already done with the meal। मुझे अपने बच्चों के लिए नगेट्स नहीं बनाने पड़े थे क्योंकि वो पहले ही से खाना खा चुके थे। तो जहां पर भी didn't have to आएगा, ये काम नहीं करना पड़ा था, या had to आएगा, ये काम करना पड़ता, तो उसके साथ हम ऑलरेडी एक और सेंटेंस ऐड करेंगे जो कि उसके पास्ट के को शो करे, मींस कि क्यों हुआ था ये काम। ओके, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें क्वेश्चंस की फॉर्म में सेंटेंस क्रिएट करना है तो डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, वो बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट हैव टू प्लस बेस वर्ड। क्या डिड यू हैव टू डू द होम कोर्स? क्या तुम्हें घर के काम करने पड़े थे? Did we have to do our work on time? क्या हमें जो है ये काम वक्त पर करना पड़ा था? Did she had to go to the school early? क्या उसको स्कूल सुबह जल्दी जाना पड़ा था? Did the dog have to bark at strangers? या कुत्ते को जो है वो अजनबी पर भौंकना पड़ा था? इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सबके साथ did have to लगाएंगे, कोई हमें दूसरी तीसरी चीज नहीं लगानी। Okay, so let's practice. Up now it's time of have practice. Did you have to come early? क्या आपको घर जल्दी आना पड़ा? अगर हाँ आना पड़ा तो आप कहेंगे yes I had to। हाँ मुझे आना पड़ा था। आपको कंप्लीट सेंटेंस की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते yes I had to। तो yes I had to सेंटेंस को जो है एलिबोरेट कर रहा है, आंसर को बता रहे कि हाँ मुझे आना पड़ा था। अगर आपको जल्दी नहीं आना पड़ा था, यू कैन से no I didn't have to। नहीं मुझे जल्दी नहीं आना पड़ा था।
डिड शी हैव टू वेट फॉर हिम, क्या उसको जो है वो क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा था. ओके माला, बासी, I'll ask you questions and you have to answer into yes I had to, no I didn't have to form. Okay, Okay, ma'am. so did she have to wait for him, क्या उसको उसके लिए इंतजार करना पड़ा था. No, she don't have to. No, you have to use no she didn't have Does to, didn't. doesn't have to. She Okay, doesn't have to. अगर मैं She ये didn't affirmative, have to. यस अगर ये हाँ में होगा तो आप कैसे यूज करेंगे. हाँ उसको इंतजार करना पड़ा था. Yes, she had to. Had to, very good. Okay, did they have to finish the work before the meeting, क्या उनको मीटिंग से पहले काम खत्म करना पड़ा था. No, they didn't have to finish the work before the meeting. No, they didn't have to. Okay, so अगर हम अफर्मेटिव में जाएंगे, हाँ में And सेंटेंस यूज yes, करेंगे. they Had to, very good, had very to. good. Yes, very good. Okay, now Muhammad Iqbal Malhi, over to you. I want to ask you questions related to uh, did have. Okay, did Rubhan have to find a job? Yes, Muhammad Iqbal Malhi, can you hear me? I guess उनके शायद नेट का कोई इशू चल रहा है, वो नहीं आ. ओके फाइन. डिड रुबान हैव टू फाइंड अ जॉब, क्या रुबान को नौकरी ढूंढनी पड़ी थी. अगर ढूंढनी पड़ी थी यू विल हैव टू से यस ही हैड टू, और यस रुबान हैड टू, हाँ रुबान को ढूंढनी पड़ी थी. यहाँ पे आप ही भी यूज करते कि हाँ उनको ढूंढनी पड़ी थी. या अगर नहीं ढूंढनी पड़ी यू कैन से नो ही डिडंट हैव टू, और नो रुबान डिडंट हैव टू, नहीं रुबान को नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ी थी. What did you have to do during the economic crisis? आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान क्या करना पड़ा था. इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ये है कि जो मुल्क की हालात होते हैं, जब हालात बहुत डाउन चल रहे होते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, और जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, जो अशिया को नोश है, खाने पीने की चीजें, फ्रूट मील्स है, उन पर बहुत टैक्स लग जाता है, बहुत महंगाई हो जाती है. तो इस सिचुएशन को कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू हैव टू डू ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान क्या करना पड़ा था. तो जो भी करना पड़ा था आप बता सकते हैं कि आई हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, आई हैड टू डू 2 जॉब्स इन अ मंथ. मुझे जो है ज्यादा सख्त मैंने
Assalamualaikum, Iqbal sir, sir, is Yes, yes. over. Can you hear me? So we have to- Okay, fine. So we were discussing. Sorry for the inconvenience. There was some issue. Okay, so we were discussing about will have to. What did you have to? Okay, so what you have to do now? You have to make the sentences about what did you have to do. अब मैं आपसे questions पूछूंगी, आपको answers करने होंगे. ठीक है? Ready? Yeah, ma'am. Okay, fine. So okay, Mala Basi, first it's your turn. What you have to do? Wait, let me. Wait, मैं आपको थोड़ा सा ये recording पे लगा दूँ इसको. Wait. मीटिंग को वेट मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दूं फिर आपको Okay. बी लाइव ऑन क्लास it's now on recording. So Mala Abbasi, what did you have to do when you were a teenage girl? आपको क्या करना पड़ा था या आप क्या किया करती थी जब आप एक teenage girl थी? Yes, Mala Abbasi. I have to start a college. Okay, you have to use had to. I had to go to the college. मैं college जाया करती थी. I had to. Yeah. Okay. And apart from this, what were your activities? आपकी activities क्या थी? I had Yes, player basketball. yes, yes. I have And what your friends had to do at college when you used to share your assignments. जब आप अपने assignment पे friends के साथ share करती थी तो आपके दोस्त क्या करते थे college से? Yes. Yes, yes, yes. Palabas, you're not audible. Hello. Now, ma'am, clear? Yes, yes. Now you're audible. Yes. So what your friends used to do at college when you were in college? Sorry? What your friends had to do with the lunch when you used to bring it to the college? आपके दोस्त जो आपके लंच के साथ क्या किया करती थी? वो खा लेती थी, शेयर करती थी जब कॉलेज लेके जाती थी लंच. They have to share. We have to share the lunch. Oh, you had to share it, and they all had to share. वो सब शेयर किया करते थे, ठीक है? And okay, apart from this, what else your teacher had to do when you were finished with the assignment? जब आप अपने assignment complete किया करती थी तो आपकी teacher क्या करती थी? Yes, yes, Mala Basi. जो आप असाइनमेंट कंप्लीट किया करती थी तो फिर आपकी टीचर क्या किया करती थी? The teacher had to appreciate me. That The I teacher had had to yes. The teacher had to give you good grades, yes, and had to, and okay, fine, okay, that's fine. Okay, it was a very good effort by Mala Abbasi. So, Muhammad Iqbal Malhi, I have to ask few questions related to have to. Are you ready, Muhammad Iqbal Malhi? Oh, yes, Are you ma'am. ready? Okay, fine. So, I'm going to ask Yes, yes. few questions related to that. When you were a child, what you had to do? What did you have to do when you were a child? जब Yeah. छोटे से बच्चे थे फिर आप Yes, क्या किया when करते थे? Yes. yes, when I was child, I had to go to school. I had Okay. to make I had to make some extra Yes. works
which were not uh, which I could not do, but I had to do because they were ordered from my parents. I had to also play a role in the class as well because Okay. that roles were attributed by the teachers as well. Mm. I had to complete my assignments before going to school, and I had also had to do all those works which were given me by both uh, father and mother as well, and I had to obey the elders as well, Okay. and I Okay, I had have another to. question. Very good. I have a, what did your parents have to do when you used to ask for some new toys in your early childhood? जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे, जब आप अपने पेरेंट्स से टॉयज का पूछते थे कि मैं टॉयज खरीदूं या खरीदना चाहती हूँ, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता, वो क्या करते थे? Yes, when I had to make some demands to parents for the toys, they had to fulfill my demands, and they had to go bazaar for shopping, and they had हम्म. to also provide the toys which I liked, and they had to make arrange money for those toys, and they Okay. had to also make all those steps. They had to take all those steps which were necessary for my safety Okay. for against those ties because there was at that age when I Hmm. was a child, it was some toys were prohibited for child, so my parents had to be very Okay. conscious about them. Okay, so it was like very good effort by your parents. Still, they used to fulfill your demands. Okay, so now you are much familiar with how you have to use have to or did have to. Now we are looking forward for another slide which is about will have to. जैसे हमारे अब्बासी आपने पूछा था ना कि करना पड़ेगा के लिए हम क्या यूज करेंगे जो फ्यूचर में होगा. We have read about the present, we have learned about the past. Now we are going to learn about will have to, जिसका मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. करना पड़ेगा वो काम जो है फ्यूचर में बहुत जरूरी होता है, तो वहां हम करना पड़ेगा यूज करते हैं. नेसेसिटी इन द फ्यूचर. ओके, सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज अबाउट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर होगा कि जितनी भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे, हैव, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, यू हैव टू यूज विल हैव टू प्लस बेस वर्ब. आपको इन सब के साथ विल हैव टू यूज करना है. ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस. आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब सून. मुझे जो है बहुत जल्दी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी. मतलब ये है कि इस बंदे को अपना पता है कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो पा रहा, वो पैसे कहाँ से अर्न करेगा, तो कुछ भी करके उसको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी. लाइक इट इज नेसेसिटी ऑफ हिज फ्यूचर, ये उसके आने वाले वक्त की क्या है, एक जरूरत है. शी विल हैव टू रिपेयर हर फोन वेरी सून. उसको अपना सेल फोन बहुत जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा. दे विल हैव टू गो होम अर्ली. उनको जल्दी घर जाना पड़ेगा. अच्छा, दे मतलब ज्यादा लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे थे. सैम विल हैव टू लीव द क्लास अर्ली. सैम को अपनी क्लास जल्दी छोड़नी पड़ी. निमल एंड सुनील विल हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन नेक्स्ट वीक. निमल और सुनील को अगले हफ्ते ट्रेन से आना पड़ेगा, ये सफर करना पड़ेगा. वी विल हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस. हमें जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या अहकामात जो है उन पर अमल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. अब okay, now what you have to do, both of you, Muhammad Iqbal Malhi and Mala Abbasi, you have to do the conversation while using will have to. आप दोनों को will have to में conversation करनी है. अब क्या है सर, मोहम्मद इकबाल मल्ही, you are the teacher here and Mala Abbasi, you are the student here. अब will have to को use करते हुए आपको entire conversation करनी है. Yes, मोहम्मद इकबाल मल्ही and Mala Abbasi, over to you. Yes, Okay, ma'am. yes. Hello, Malavasi. You will have to prepare yourself for the next assignment tomorrow. Yes, I will have Will to have prepare you myself. ready for that for that assignment? Sorry, sir. Uh, yes, I, yes. Will have you also make some other assignments as well before except writing, and you have also performed some activities in the class as well. Yes, I will have to. Oh yes, okay, okay. I think that I also have to
give some tasks to different students, because all students will have to participate in this function with wholeheartedly, and they will have to perform at their best level. Okay, and I think that you will have to perform a role. You will have to perform a role of some uh, active girl in the drama, which has been written in the which we have Yes. decided to Yes, perform Madam at the Basi. stage. Are you listening to uh, Yes, sir, I will have to perform the drama with Oh full yes, heart, I with heartedly. oh yes, I think that you can do and you will have to do, because the specific role attributed to you, the specific role attributed the specific role attributed to you have some great importance, and role attributed this role will have will have to reflect all the over traditional past tradition, and particularly the Mughal empire history as well, because you have to play the role of Nur Jahan of that time. Yes, sir, I will try my best. I will have to try my best that I will have to perform the duty. I will have to perform the role as you wish. And mm, inshallah, I Okay. think I will have to do it. Okay, I personally suggest that for this purpose, you will have to search the Google. You will have to use the Google search engine. You must go there and search the role of a Noor Jahan, and then you try to. You will have to elaborate it and perform it according to the and according to that so that there should be reality reflect maximum. Yes, sir, I have to visit many websites and I have to collect it. I have to collect dress which Noor Jahan wears and jewelry has. And now I'm trying to I will have to perform actually the Noor Jahan exact role and her speaking and her action as well. Okay, okay. Your art teacher will also facilitate you, and you will have to take guidelines from her as well. Okay, sir, I will have to take the guideline to her from her. Okay. all all the relevant all and requirements and the instructions which I think important I have transformed you, and I think I have confidence in you that you will have to perform with wholeheartedly, with full devotion and confidence. I have best wishes for you. Thank you. I will have to consider your all wishes and your advice as well. okay, it was a Okay, very sir, good thank you. effort by both of you, Muhammad Iqbal Mahi and Mala Basi. Now let's move towards the next slide, which is about how you can do the basic structure of while when you are discussing about a negative sentence and question mark sentence. ठीक है? You have discussed about we have discussed about affirmative sentence, मतलब जो simple sentences है उसकी हमें समझ आ गई कैसे हमें फॉर्मेशन करनी है, किस तरह से हमें डायलॉग्स बोलने हैं. अब हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है कि अगर हम इसको विल हैव टू नॉट में यूज करेंगे तो क्या होगा. अच्छा, विल चेंज हो जाएगा वोंट में. यहाँ पे वोंट का मतलब ये नहीं करना पड़ेगा, और हैव टू मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के पास हमारे पास क्या आएगा अगर नहीं भी है सेंटेंस. वोंट हैव टू प्लस बेस वर्ब. I, we, you, they have, he, she, it, any names, singular noun and plural noun, and then you have to use won't have to. नहीं करना पड़ेगा. So let's practice. I won't have to go early. मुझे जल्दी नहीं जाना पड़ेगा. We won't have to finish the assignment next week. हमें जो है assignment अगले हफ्ते खत्म नहीं करनी पड़ेगी. You won't have to come in 2 days. आपको 2 दिन में नहीं आना पड़ेगा. They won't have to pay the fine. उनको जो है वो फाइन नहीं भरना पड़ेगा.
रोवान won't have to take medicine. रोवान को जो है वो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी. फाइन. So I'm going to ask few questions. तो आप लोगों ने अगर नेगेटिव मुझे आंसर करना है, you have to just answer me. Okay? So are you ready? All of you? Okay, one by one I'll ask We questions. have, Sorry? ma'am, we just use want to, or can we use will not to? You have to. I won't have to. इतना अगर आप बोल दी तब भी it is okay. Okay? But if we write that will not have to, then it's correct No, or no. not? No, will not जो है वो won't में चेंज हो जाएगा. ठीक है. Here you have to use won't, क्योंकि won't जो है वो क्या है, will की second form है. Got it? Okay, but then we have to use here when we are using the future tense and we are answering, Yes. then we will use the second form. Yes, second form. In future हम second या third, future में third, basically third. अच्छा, second और third forms basically एक ही जैसी होती हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पर third form use करेंगे, because as already I have discussed in future, जो previous sentences मैंने करवाए have to, has वाले और had to वाले, तो उसमें भी हमने future में क्या है, third form use किया है. ठीक है? Got it? So you have to use only the third form of will, which is won't have. Okay? So I'm going to ask the questions. You have to answer me in by using won't have. Okay? Will you have to do your work early in the morning? Yes, Malam Basi. I won't have to do. Okay, fine. Will you have to finish your assignment on time? We won't have to do the assignment next Okay, on time. Okay. Will you have to invite your mother at your house? I want to invite my mother in home. Okay, fine then. Okay, now Muhammad Iqbal Malhi, will you have to make your children go to school? Yes, I won't have to make my children to go to school. Okay. No, you will say no, I won't have, क्योंकि won't का मतलब ही नहीं होता है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा. Fine. Okay, okay. Yes. Will you have to prepare meal for your wife tonight? No, I won't have to prepare meal for my Okay, very wife good. that night. Okay, very good. So now are you familiar with how you can use won't have? अच्छा, एंड में हमारे पास एक क्या आएगी, एक्टिविटी आएगी, जिसमें मैं आपको यही वाले जो एक सिनेरियो बताऊंगी, तो वहां पर आपने क्वेश्चन में भी यूज करना है और नेगेटिव फॉर्म में और अफर्मेटिव फॉर्म में भी. वो आपको जो है सारे सेंटेंसेस होने चाहिए ताकि आपको तीनों क्लियर हो जाए. ओके. Now what we have to do? Can you see my screen? Okay, now Yes, it is ma'am. about question. तो Yes, क्वेश्चंस हमें किस तरह से फॉर्म करने हैं, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, सेम वही चीज है. तो क्वेश्चन में दोबारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, वोंट नहीं आएगा. वोंट हम सिर्फ नेगेटिव में यूज करेंगे. क्वेश्चन में वंस अगेन इट विल बिकम विल, एंड विल वी विल पुट विल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, विल जो है वो सबके साथ लगेगा, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन. विल आई हैव टू डू वर्क टुनाइट, क्या मुझे आज काम करना पड़ेगा. विल यू हैव टू प्रैक्टिस द फुटबॉल टुडे, क्या तुम्हें आज फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. विल वी हैव टू गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस टुडे, क्या हमें आज ऑनलाइन क्लासेस लेने जाना पड़ेगा. तो इस तरह से हम फॉर्म करेंगे. नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑफ द सेंटेंसेस. विल यू हैव टू कम अर्ली, क्या आपको जल्दी आना पड़ेगा. अगर हाँ आना पड़ेगा, यू कैन से यस आई विल हैव टू, हाँ मुझे आना पड़ेगा. अगर नहीं आना पड़ेगा, यू कैन से नो आई वोंट हैव टू. अच्छा, नहीं में देखिए फिर विल हैव हट गया, वोंट लग गया. नहीं, मुझे नहीं आना पड़ेगा. विल शी हैव टू वेट फॉर हिम, क्या उसको उसका इंतजार करना पड़ेगा. अगर यस में है, यस शी विल हैव टू, हाँ उसको करना पड़ेगा. अगर नहीं करना पड़ेगा, यू कैन से नो शी वोंट हैव टू, नहीं उसको नहीं करना पड़ेगा. विल दे हैव टू साइन द एग्रीमेंट, क्या उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. अगर हाँ में है, यू कैन से यस दे हैव टू, हाँ उनको करना, दे विल हैव टू, हाँ उनको करना पड़ेगा. अगर वो नहीं में होगा, यू कैन से नो दे वोंट हैव टू, नहीं उनको नहीं करना पड़ेगा. विल रुबान हैव टू फाइंड अ जॉब, क्या रुबान को जॉब ढूंढनी पड़ेगी. इफ यस, यू कैन से यस रुबान हैव टू. इफ नो, यू कैन से नो रुबान वोंट हैव टू. Will students have to leave soon,
If yes, you can say yes, students will have to. If it is in no form, you can say no, students won't have to. नहीं, students को नहीं करना पड़ेगा. Okay. So, what you have to do, I'm going to ask the questions. You have to answer in form of will have to. और अगर आपको लगता है कि नहीं भी करना है, you can answer no, I won't have to. Okay, I'll ask one by one. Yes, Mala Basi, will you have to Okay, prepare fine. the lunch tonight? Sorry, dinner tonight? Yes, I will have to prepare dinner tonight. No, I won't have to prepare. Okay, fine. And will your kids have to come early from school today? Yes, my kid have to come early today, and yes, no, my kid won't. No, They won't he have to. Okay. won't have to. No, he won't have to. Okay. So, will your maid have to clean the house? Yes, my maid will have to clean my house. No, Very good. she won't have to clean my house. Okay, very good. Okay, sir, Muhammad Iqbal Malhi, now it's your turn. Will the employees under you have to complete all the tasks today? Yes, the employees under me will have to complete all the tasks today. Okay, and Muhammad Iqbal, you can also say yes, they will have to. Short form में भी आप कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर अगर आप पूरा sentence नहीं Okay, बोले तो भी it is correct. Okay, so you can okay. say no, they will, no, they, okay, yes, they will have to. हाँ, उनको करना पड़ेगा. नहीं में हो, no, they won't have to. नहीं, उनको नहीं करना. Simple. So, okay, will your wife have to go to her mother house tomorrow? Yes, she will have to go. And अगर ये नहीं में होगा, not में, फिर हम कैसे कहेंगे? Oh no, no, she won't have to go. Have to. Okay, very good. So, will your kids have to go to park next week? Yes, they will have to go. Okay, and if it is a not, so how No, you can no, 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 they won't have to. won't have to. No, no, they won't have to. Okay. To yes. So now, are both of you are familiar with the sentence? How you can use will have to, how you can use have to, and how you can use have to. Okay. कि हमने जो बेसिकली है have has to को हमने प्रेजेंट में भी देखा, पास्ट में भी देखा, फ्यूचर में भी देखा. ओके, ये किस तरह से हम यूज कर सकते हैं. Okay, now we have एंटर स्लाइड से लास्ट की स्लाइड है प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट में क्या है, नाउ आई हैव टू, अब मुझे करना है. हमने जितना भी प्रेजेंट है उसको हमने डिस्कस किया हैव टू में. बट इन द फ्यूचर अगर हम आने वाले वक्त के बारे में बात करेंगे तो हमें विल हैव टू, विल लगाना पड़ेगा. विल का मतलब करना पड़ेगा. नाउ आई हैव टू का मतलब मुझे अभी करना है प्रेजेंट के बारे में. एंड फ्यूचर के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, वी विल से लाइक आई विल हैव टू, मुझे करना पड़ेगा. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. What do you have to do when you ride a motorbike? जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है. ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है, अगर यही पास्ट में जाएगा तो क्या होगा, what will you have to do if you want to save money in the future? अगर आपको मुस्तकबिल में पैसा बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. सी, हमने पहले में सिर्फ हैव टू का यूज किया, सेकंड में हमने विल हैव टू का यूज किया. इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है. ओके, अब आपने क्या करना है, आई गिव यू एग्जाम्पल टू बोथ ऑफ यू, और उसमें आपने क्या करना है, आपने इसको चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हैव टू है तो आपने इसको विल हैव टू में करना है. अगर विल हैव टू है तो उसको आपने सिंपल हैव टू में प्रेजेंट में करना है. ओके सर, मोहम्मद इकबाल मलही, it's your turn. So what you have to do now, you can tell me, what do you have to do if you want to start a new online business? You can change it into will have to. तो आप कैसे चेंज करेंगे, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिर्फ will have to लगाना, कैसे करेंगे? Yes, I will have to Yes. go for online business. Okay. No, you have to change. अब जैसे ऐसा है ना, what do you have to do? Okay, तो आपने सिर्फ okay. इसको will have में चेंज करना है, बाकी सेंटेंस Fi- स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सॉरी, प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाना. सॉरी, प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाना. मैं फ्यूचर में लेके जाना है.
Yes, I will have to do. यस ओके एंड अब हमारे पास सेकंड फ्यूचर, इसको आप प्रेजेंट में कैसे लेके जाएंगे? व्हाट विल यू हैव टू डू Yes, I इफ यू I I have to do. यस वेरी गुड ओके नाउ माला बासी इट्स योर टर्न what do you have to do yes what do you have to do when you want to save the money इसको अपने फ्यूचर में लेके जाना है सेम सेंटेंस को What what do you have? You are saying you have? you have to use will have okay इसको अपने फ्यूचर में लेके जाना है तो सेम सेंटेंस को आप फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे What will you have to do if you want to say something? what do you have to do when you ride a motorbike What will you have to do? you can say what will you have to do see I have also given the example over here okay बाकी सारा Okay. सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है सिर्फ डू यू हैव की बजाय विल यू हैव टू है तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा और अगर हमने सॉरी फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर को दोबारा हमने प्रेजेंट में लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे विल यू हैव की जगह दोबारा डू यू हैव लगा लेंगे ओके डू यू हैव जो है प्रेजेंट के Okay. लिए है और विल यू हैव जो है किस चीज के लिए है वो फ्यूचर के लिए है गॉट Future. इट Okay, now what I'm going to do, I Yes. am giving a scenario to both of you where you can use the future tense. Okay, तो आपने क्या करना है इसको फ्यूचर में सारी जो है आपने डायलॉग्स वो है बोलने हैं. It means that you have to use will have to. Will have to आपने use करना है. Okay, so are you ready both of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So Muhammad Iqbal Malhi and Mala Abbasi, you both are colleagues in an office and you have to discuss about the future assignments, the meetings and the progress report. So how will you discuss it in while using the future will have to, जिसमें negative sentences भी आ जाएंगे, affirmative भी आ जाएंगे और question वाली. Okay, ma'am. Yes, Muhammad Iqbal Malhi, you are the boss here Yes, and ma'am. Mala Abbasi is your employee. So you may ask for the questions. Yes, ma'am. Yes, Malabasi. In future, we have to face a lot of challenges, and we have to complete all of them for survival of our company and make great progress in the this scenario. So I have to make consultation with you on this issue. What should we have to do? What will we have to do for future better prospects and better future? What should steps we have to take at very early stage? Yeah, sir. We first we will have to check our weaknesses, and then after this we'll have to make a plan to overcome these weaknesses, and after this we will have to start our progress. Okay. I understand that. First of all, we will have to highlight our weaknesses and will have to take steps to eradicate all such restrictions and problems which we are facing in flourishing our business as well. Okay, I agree with you. And from where we have to start, from where we will have to start all these things. First of all, I think I so. think that, We yes, will yes, have please. to start with your manager, and after this you will have to go down, because I Yes, think that the culprit is from your upper position holders. yes. I gather from your point that first of all, I start from myself. I will have to prepare myself, and I will have to present me as a role model for others as well. I think that where I will have to perform take such steps, there you will have to also take further steps because I think that in my absence, you will have to take all the responsibilities. You will have to manage the office. You will have to take extra steps like in emergency and in emerging positions. You will have to tackle all the situations. And I think where I have to perform, I have to become a role model. You also have to perform yourself as well because you are second to me in your office.
Yeah, you are right, sir. And the second thing, we Okay. will have to our office earlier, and we will have to off our office late. We Oh, have to yes, yes. increase our working hours, and for this we will have more weaknesses. Okay, okay. I think you are suggesting that we will have to increase the working hours as well. Yes, I think that this is very suitable in this scenario when the particular the Ramzan situation is Ramzan holy month of Ramzan is going on. Instead of increasing the office hours at the after dinner, second time we must open our office. I think we will have to open our office at early stage instead of later, Yeah, sir, you are right. because I think that if we open our office at 8 a.m. instead of 8:30, then definitely we will have to mentally prepare our whole team as well, because your suggestion is very important and I evaluate it. But this can be implemented with the consultation of the whole team, because we are working here as a teamwork. I believe that teamwork definitely get fruit as well. So I this responsibility I award you, and I appoint you that you should also take you will have to take steps, and you will have to coordinate with other staff members as well, and then you will have to make a whole roadmap, and that how open how when our office will open, and when will we have to make close it, and then what will happen if we are taking extra hours from the labor. We will have to pay definitely them more. Malabasi, she has left. Yes. Okay, Malabasi is again here. Yes. Okay, okay, sir. I will have to do this uh, perfectly. And I think so many of our workers will have to billing for coming earlier so that they will have to complete the task properly Yes, definitely. and in time. Yes, that is great. And I And also give they have full some financial issues. That's why they also want to do some extra working hours, and also want to they will have to take some money. I think so everyone will be ready for this. uh, def definitely, I agree with you, and I give you full authority that you may negotiate with them and for awarding extra money for their extra hours as well. Thanks. I believe that you would definitely you will have to perform, and I believe that you can do it properly. Okay, Thank you. Okay, thank you. so it was a very good effort by both of you. Now, what you have to do, as you remember that in previous class, I had given you an assignment that what you had to do, you had to make a video of your own, at least 5 minutes of video, in which you had to discuss about the previous incident or the place where you had visited in your past. You have to discuss some few good memories and the bad incidents happening. Had you done the assignment? Yes. Have you done it, Muhammad Iqbal Malhi? Oh, yes, ma'am. Have you done with the assignment जो मैंने आपको एक वीडियो असाइनमेंट दी थी? मैंने आपको कहा था आप लोगों ने 5 मिनट्स की वीडियो बनानी है जिसमें आप लोगों ने Yes, ma'am. प्रीवियस Definitely, I will do, because ओके weekend is very busy. ओके Yes, I in yes, Sir, I will do it up to today, yesterday but it will be done. is ओके it फाइन possible that I have to send just audio, यस not यस video? यस इट्स पॉसिबल If it's यस यू कैन possible, सेंड then I have to share, yes you can send in because audio as video well. I Yes.
Yes, you can send in Okay. audio as well. But Okay. the Then basic thing I is will actually share. I want to hear your conversation, your dialogue, how you may prepare the sentence, how is your structure formation. The main theme is that. Okay, तो वो बेशक आप फिर voice में ही send Okay. कर सकते हैं. It's okay, it's not a big deal. Okay. So what you have to do here, I also want one thing that I want you to discuss about the previous experience of any incident which was very bad, which is still remembered by both of you. So आप लोगों ने 5 minutes में मुझे बता देना. Okay, मोहम्मद इकबाल मलिक, over to you first. You had to tell me about any bad incident या bad memory जो आज तक आपको याद है, but you have to tell in the past form में, जैसे story सुनाते हैं. Okay, it is related to the previous assignment to some extent. Okay, man. Uh, there was a great uh, activity and great memory in my mind that when we visited India. There were some things and some you can say incidents for which very uh, intolerable for us because the some happenings were out in such a way which were against our religious thoughts, which were against our culture as well. So I think that those incidents were very have bad effect upon my memory, and they are still alive in me. Uh, ap- there was such some kind of such happening that we stayed in New Delhi, and one day we decided to visit Jamia Masjid of Delhi, which was built by the old Mughal emperor. So when we uh, hired a rickshaw, because in India rickshaws are very common, so we traveled from usually traveled with rickshaw as a traveling purpose. So when we hired, we asked him to go to New Delhi, but the New Delhi Mosque. But after conversating and deciding the fare, we decided that he will charge us 50 rupees, 50 Indian rupees. So when he started, we observed that after few minutes, his meter was started to move with very rapid speed. And we asked him that and when we reached our destination, he asked us to for more fare. Whereas we told him that we have fixed charge. He cannot charge according to his meter as well. But after a negotiation and after great discussing, he said that he can't take fixed rupees because he has installed meter for this purpose. So, as we were the farmers, and there were we helpless. So we decided that we should pay him as he desired. And when we asked him that how much money more he required, he said that more 50 rupees. We were very astonished and we became worried once again because we thought that he may demand 10 or 15, 10 or 20 rupees, but he demanded double what he had already taken because 50 rupees he already taken and 50 more he was demanding, which was not understandable for us. But uh, we thought that we should pay him because there was no voice which there was no authority which could hear our voice. So we paid him, and that incident is still memorizing in my memory because we paid unfair, which was not fair at any stage because Like it was a it very was her tough greed. time for you in those days. Oh yes, yes, it was for her greed, and at that Okay. time we also came to conclusion that Okay. the psyche, the nature, the culture, the thinking is as well here in Pakistan as the Indian have as well. Okay.
Yes. Okay, so like, and what did you learn from this incident? Yes, we learned very well that first of all we settled it properly, and we have to pay after the traveling, not at the very start. Okay, so like you still learned a big lesson from that. So it was okay. What we think whenever we are like facing the bad situations, so we are very so much we are down and we are like in stress. But the good thing of bad days is that it is like a lesson for us. It keep us alive and it keep us going on, and it also keep us realize, make us realize that yes, who is a true friend of us, a true relative of us, who is there to help out in our bad days, and who are just like showing off to us like we are all on your side. But once the bad situation happens to us, so they all leave at the same place. So the good thing about bad days is that this we learn a lot of big lessons from that, and the mistakes which we have done in the past, we should avoid it in the future, and we should be prepared for the bad time as well, as the bad time can be for anyone in the future. So we should also there for help if someone need our help. Okay, it was a good thing One that you thing learned. which, Yes, sorry, one thing I, with due respect, I yes, would like to add that yes, yes, the continuity and the journey of life should not stop at any cost, yes, because either it is bad or worse, we have to mhm, face, we have to survive, and we have to yes. We have continue to. on the Yes, yes, we have to survive. yes, At any yes, point, at any cost, we are not able, we should not stop. Because if once we stop, so what will happen? The other people will take advantage of our case. yes. Yes. Okay, so Muhammad Iqbal Mahi, it was a very good discussion that you discussed about your past. The incident or what you have learned was quite good. So, Mala Abbasi, over to you. What would you like to tell us about any incident which had happened in your past, which was so bad, and still you remember it and you get the goosebumps? So, what sort of incident you want to share with us? Yes, Mala Abbasi. Ma'am, I have learned many things, but I did not have any such Okay, type of accident that which okay. I think so is In your very childhood, maybe it could be in important. your childhood. But I think that so many I have to uh, I trusted so many people and they deceived me, and Like they then betrayed you. the You say actually that all the people you yeah, trusted, they betrayed you. yeah. And also I Okay, have bad experience of my hostel life as well. That okay, whenever we are late just 5 to 10 minutes, so we mostly we did not get food and for late going there. These are the little bit memories, but I think so it's not big. So that okay. So basically, you will learn what sort of thing that you should not trust everyone. Everyone is not trustworthy. You have to trust only few. The one which you consider should be trustable, because everyone in nowadays world betrays. So that is why trust is the most important thing which you have to. Because if once you put your trust in someone else, it's like you have given your weakness to him. You have told everything about you, your life, about your weakness. So it is the main thing which you have learned from your past mistake, that you should not trust everyone, because everyone is not trustworthy. Everyone is not capable to win your trust. Got it? yeah, yeah, ma'am. Okay. So it was a very good And effort by then both one of thing you. I will discuss that Mhm. we have to take care ourselves first, and Yeah. after this the others. So Yes. if we ignore ourselves, then other are also ignore Yes. us. So Other way. Yes. first we Very have good. to So take what care. We first? have to But love we have ourselves. to take ourselves first. Mm. अब That is टेक केयर में क्या आ I जाता can है? do. टेक केयर में सिर्फ But हमारी the lesson पर्सनैलिटी of नहीं my life. आती है. It's यस,
in taking care, we should take care of ourselves. Like we should take care of our mental health, our body health, mental health की भी take care करना बहुत जरूरी है. Like we should control our stress level. So what is your opinion, Mala Basi? How can we control our stress level? I think so. My stress level control whenever I was in stress and I was tired and I feel bored and I feel sad, then I make a call to my father. But Okay, now fine. he's no more, And if so it I come just make towards a me, call to my how mother. I control myself, first of all I keep myself busy, because I have noticed in me that whenever I am free all the time, or I get the spare time, so वो होता है ना stress level आ जाता है. So how do I control my stress level? I think the best is to do the zikr. Zikr is the most important thing, the part of our life, so we could not be in stress anymore. What do you think? Yeah, you are right. And I also giving you the second point that I I start tafsir Quran Hmm. whenever I am free and then I am bored and then Yeah, very good. So it was a very healthy and helpful conversation with both of you, Muhammad Iqbal Malhi and Mala Basi. I enjoyed today's lesson, especially the end one slide. We have discussed our past, we discussed about how we should control our stress level and all that stuff. So in the next class, inshallah, we will also discuss the life related things. वो भी हम discuss करते रहेंगे. इससे हमारी English conversation भी अच्छी होगी. Plus, we can understand the life better and we can have ideas about each others, कि किस तरह से हम आइडिया हासिल करें, किस तरह से हमें कौन सी चीज को कंट्रोल करना है, एनहांस करना है. सो आई होप you have enjoyed today's lesson. So I'll send today's activity of reading and learning about in the group. So I hope that you both will have to complete the assignment. Inshallah, by the next lecture, I'll ask you for assignment. You can also do it in voice form. Okay, so it's not big deal. So inshallah, we'll meet in the next lecture. Hope have a good day and good night. So take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.